and anxiety disorder among young. So, also, she has a very keen interest in working with individuals suffering from substance use disorder. She holds various certifications in psychological therapies, and she has also worked in different clinical settings. So, please join me in welcoming Gunjan, our speaker. Thank you very much. Thank you so much, Mugdha ma'am, and it's a pleasure to be here. Thank you everyone who has joined in, and I am really glad. I'm overly joyed to be conducting a session, a webinar on a topic which is one of my keen interest areas, and I would want to let all of you know that I'll be conducting this webinar with one of the prominent things which I've learned after closely working with addicts and working at a rehab center, that is using honesty, dedication, and conscious mind to actually deliver this webinar. And my humble request to all the people who have joined in webinar is to keep an open mind to gather a new and a bigger perspective regarding addiction. And first of all, let us know as to what are your beliefs about addiction. What do you think about addiction? And I want to keep this an interactive session. I do not want just for me to speak and for you to listen. I want to know your viewpoints, and let's come together and discuss as to what is addiction, what is substance use disorders, and how is it actually impacting our lives, and what we as a society can do to help people get out of it. So starting off, I would like the next slide to be presented. Okay, so here we have one statement. I hope it's visible to everyone. Just a little raise of hand will be enough. I hope the slides, I'm properly audible and visible also, and the slides are also visible. Okay, great, great. Okay, so here's a one single statement in front of you all, जिसमें लिखा है addiction is a choice. आप लोग मैसेज टाइप करके भी मुझे बता सकते हैं, और यू कैन जस्ट open up your mics and respond as to, according to you, keeping all the theories and knowledge about addiction out of the picture, what do you think? Addiction is a choice, true or false? Someone, I would want someone to respond and engage. Just write true or false, whatever you believe in. True, okay? True. False. It is not a choice. True. True. Okay. Any more responses? False. Okay. True. Okay. So, okay. Any more responses? False. Okay. Okay. Thank you so much. So clearly, according to the responses that we have got, 60 to 70% people believe, individuals believe that addiction is a choice. They voted for true, right? So starting off this webinar on a very positive note, I would like to actually admit in front of all of you that according to scientific research, according to all the studies that have been conducted, जितनी भी research हुई है addiction को लेके आज तक, जितना भी हम समझ पाए हैं addiction को, from centuries we have been studying about, we have been researching about what are the different methodologies of addiction. क्या कैसे होता है एडिक्शन, क्या ये चॉइस है, क्या ये मोरल फेलियर है, या फिर ये एक ब्रेन डिजीज है. To come up and start the webinar with this, I would like to confess and vouch that addiction is actually a brain disease. It is not a choice. Choice is for a person or an individual to start using a substance. चूजिंग कि हाँ आज मैं ये सब्सटेंस ट्राई करूंगा, वो उनकी चॉइस है, पर एडिक्शन होना किसी को वो उनकी चॉइस नहीं है. इट्स लाइक बेसिकली सेइंग कि मैं चाहता हूं मुझे कैंसर हो, इट्स माय चॉइस कि मुझे कैंसर हो.
जितना ही सुनने में ये अजीब लग रहा है कि मैं चाहूंगा कभी कि मुझे कैंसर हो, उतना ही अजीब होना चाहिए सोसाइटी के लिए ये बोलना कि एडिक्शन एक चॉइस है। या फिर अगर कोई नशा कर रहे हैं, कोई एडिक्ट हैं किसी सब्सटेंस को लेके, तो वो उनकी चॉइस है, अगर वो चाहें तो वो आज भी छोड़ सकते हैं। ये मानना खुद में ही एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस एंड ओन लर्निंग एंड ओन पर्सपेक्टिव अबाउट एडिक्शन बिफोर एंटरिंग इनटू साइकोलॉजी और बिफोर स्टार्टिंग टू वर्क एट Simranshri Rehabilitation Centre. Actually, I always used to believe that addiction is somewhat a ethical or a moral failure of an individual. कि अगर कोई नशा करते हैं या कोई सब्सटेंस यूज करते हैं तो वो उनके अंदर एक फ्लॉ है, एक एडिक्शन, एक फ्लॉ देखती थी मैं, क्योंकि आई हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड पीपल इन माय फैमिली आल्सो बी अफेक्टेड बाय इट. सो आई ऑलवेज यूज टू बिलीव कि नहीं, किसी को पता हो अगर दैट माई इमोशनल माई यूजिंग और माई टेकिंग द सब्सटेंस इज कॉजिंग इमोशनल पेन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सोशल प्रॉब्लम्स टू अदर पीपल, किसी को बहुत सारे डायमेंशंस पे दिक्कत हो रही है मेरी कोई चीज करने से, तो वो चीज कैसे वो इंसान मान सकता है कि वो ठीक है? किसी और को तकलीफ देके कोई चीज करना कैसे ठीक है? This was my mindset, and I'm telling this with brutal honesty. Now, being a psychologist, I might have different opinions, but before entering into psychology or entering into the world of substance use disorders, I always used to believe that addiction is a flaw, a character flaw, but it is not. स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे समझना पड़ता है कि एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि कोई सब्सटेंस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बेसिक चीजें जो लाइफ में जरूरी हैं उससे ऊपर वो सब्सटेंस दिखता है, या फिर ट्रीटमेंट जो लोग ले लेते हैं उसके बाद भी रिलैप्स होते हैं। तो अगर ऐसा हो क्या रहा है, क्या वो इंसान को हमें बोलना चाहिए कि तुम गलत हो, या फिर हमें समझना चाहिए कि व्हाट्स एक्चुअली इनसाइड ओवर हियर दैट इज गोइंग ऑन, and why is it important to connect on a spiritual level with your soul, with yourself, to actually treat this disease? We'll be starting off with this. So I think it might get a little bit theoretical, but I want to put this picture forward for everyone watching to see actual picture of the brain when the addiction is completely absorbed. So I hope सबको screen दिख रही है, and you can see that I am showing you a picture of a brain, a horizontally dissected brain. बहुत ही ज्यादा theoretical ना जाते हुए I would try my best to explain. First, I would like to explain that क्यों जरूरी है ये समझना कि actually brain में क्या हो रहा है. बहुत easy नहीं होता है कि if you have taken the substance for the first time, you are an addict. No. Addiction is a process. It's not one time thing. You become an addict in a process. You gradually step by from starting from using or trying the substance for the very first time, then moving on to dependency, and then being an addict. It's a process. And how addiction, gaining addiction or having an addiction is a process, similarly recovering from it is a process. That is the only foremost reason that rehabs vouched the families to only give us the time that we need to actually work on the person dealing with substance use disorder. ऐसा क्या होता है बेसिकली वो समझना हमारे लिए जरूरी है. आई होप ये सबको इमेज दिख रही होगी. कैन वी पुट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, आई होप सबको ये इमेज दिख रही है. थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हुए आई वुड ट्राई एंड मेक इट वेरी इजी फॉर एवरीवन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, टू चेंज योर पर्सपेक्टिव एज टू व्हाट इट इज एक्चुअली in the brain. Why are we actually saying it's a brain disease? Why are we not only sticking to admitting that it's a moral failure? Basically, we have different parts in the brain जो responsible रहते हैं बहुत अलग अलग functioning के लिए. किसी का मूवमेंट फंक्शन है, किसी का थिंकिंग फंक्शन है, किसी का इमोशनल फंक्शन है. सबके अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स का फंक्शन ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. और एडिक्शन को अपनाने में
आप किसी चीज को अपने अंदर ले रहे हैं, आप उसके फंक्शनिंग में उतर रहे हैं, उसके लिए कुछ ब्रेन में ऐसे चेंजेस होते हैं ताकि आप वो सब्सटेंस ऐसे जुड़ जाते हैं कि उसका कनेक्शन टूटने में काफी टाइम लगता है। ब्रेन में काफी पार्ट्स हैं, बट एडिक्शन से रिलेटेड सिर्फ 3 पार्ट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कुछ ऐसे कनेक्शंस बनाने के लिए। दे फॉर्म सम काइंड ऑफ कनेक्शन between them that for you to leave the substance in one go is not possible. So starting off with the, I hope you all can see extended amygdala. So when I talk about amygdala, for you all to make for easier to make it very easier for all of you to understand, amygdala is somewhat related to preventing all kinds of threats. For example, कुछ हमारे सामने गरम रखा है, वो जब तक सेंसेशन हमें जैसे ही एट द टिप ऑफ आवर हैंड वी फील कि यार ये कुछ गरम था जिसको मैंने अभी छुआ, एंड वी immediately put our hand up, we remove the hand from there, we have some signals, we have something going on over here that is bringing out all the reactions. In the very similar way, amygdala का फंक्शन होता है कि कोई भी थ्रेट दिख रहा है आजू बाजू तो अपने आप को उस चीज से बचाना। इसलिए we can substitute with the name of amygdala with the go system. It keeps you going, it keeps you alive, it keeps you moving and safeguarding you from all the threats जो भी आपके आजू बाजू हैं। सेकेंड है आपका बेसल गैंग्लिया। Now this is the part of the brain which you should actually slightly blame, maybe to actually put a name on कि इनके कारण connections कुछ ऐसे form होते हैं। वो क्यों? क्योंकि बेसल गैंग्लिया में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रीशन होता है जो हमें अच्छा या बुरा फील करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुतों ने कॉमनली सुना होगा दैट देयर इज अ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड डोपामीन जो हमें अच्छा फील कराता है। दैट इज अ हार्मोन ऑफ कंटेंटमेंट, दैट इज द हार्मोन व्हिच मेक यू फील गुड अबाउट गिविंग दैट यूफोरिक वाइब। सो वो सारा रिस्पॉन्सेज जो भी आते हैं दैट वी फील गुड अबाउट समथिंग, दैट comes from the part basal ganglia. So we can substitute the names, it's a complicated name, we can substitute it with the wow factor or the wow system of the brain. The third and the very important part of the brain is prefrontal cortex. Prefrontal cortex is your guiding force. आप इनको कह सकते हैं कि जो आपको बता रहे हैं कॉन्शियसली कि नहीं आपके लिए ये सही है, आपके लिए ये गलत है। वो कौन सी चीज है जो आपको बता रही है कि अभी ये करना चाहिए, अभी ये नहीं करना चाहिए? दैट इज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दैट यू कैन नेम एज द स्टॉप सिस्टम। मीन्स it stops you when you're doing wrong. It actually tells you to go forward when you're doing right. Now, it's a very commonly known thing that people who engage in addictive tendencies or who try substances at a very young age have maximum chances to turn to be addicts. Why is it so? Because I hope people might be aware of this, that the prefrontal cortex यानी कि ये वाला अपना हिस्सा वो रिस्पॉन्सिबल रहता है सारे डिसीजन मेकिंग के लिए, सारे कॉग्निशन के लिए, थिंकिंग पैटर्न के लिए, जो आपको सही डिसीजंस लेने के लिए गाइड करता है। वो डेवलप होता है मिड 20s तक, यानी कि till you are turning 25, 24, your prefrontal cortex was still developing. Who is actually guiding you कि अभी ये करें, अभी ये ना करें? So basically, to guide you as to what you should do, what you shouldn't, the prefrontal cortex have to be completely developed. That is why we have age restrictions on many of such substances or such practices, because of the biological reason also, that your brain is not completely mature enough to actually take sane decisions about it. अब ये तीनों का फंक्शनिंग तो समझ में आ गया है, बट एक्चुअली होता क्या है कि हम एडिक्ट बनते हैं या किसी कोई इंसान को सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर होते हैं। बेसिकली इमेजिन बीइंग 16 year old and going to a party with friends. For the very first time, you have a social world around you to interact. Now, keep in picture all the life experiences जो अभी तक आपके हुए हैं, जितने भी आपके experiences रहे, good, bad, traumatic,
or some disturbing experience, some very good experience, they all are inside you over here. And for one instance, that you are going to a party, you are going to meet someone, and your age is about 16 to 18. There, people around you told to try a substance. Could be, it can be alcohol, it can be any dry substance for you to try. And you tried. You got that euphoric vibe because of the chemical hooks present in the substance. You actually felt good, you actually felt happy, you actually felt content with all that was giving you a euphoric vibe, a good vibe, because of the basal ganglia. यानी कि वो वाव फैक्टर जो आता है सब्सटेंस लेने के बाद कि यार हमने अभी तक ऐसा फील नहीं किया था. दिस एक्सपीरियंस इज नॉट नॉर्मल. This experience is above normal, and I'm not able to feel all those things which I was feeling before. I'm feeling something good constantly till that time the substance is in my body. So what happens is amygdala, जिसको हमने बोला था गो सिस्टम है, वो बताएगा कि आपके लिए क्या आपको थ्रेट से प्रिवेंट कर रहा है. थ्रेट क्या हुआ? कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस हो रहा है, कोई भी एंजाइटी के सिम्टम्स हो रहे हैं, या कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दिमाग से नहीं निकल पा रहा है, वो कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चल रहा है, उस चीज से ब्रेक चाहिए रहता है. एमिगडाला हमेशा बार बार बोल रहा है कि यार मुझे ये सारी चीजें फील नहीं करनी, मुझे स्ट्रेस नहीं फील करना, मुझे एंग्शियस नहीं फील करना, या मैं अभी अपने जितने भी वर्कलोड या कोई भी चीज से ऑक्यूपाइड हूं, मुझे इस सबसे डिस्ट्रैक्शन चाहिए. एमिगडाला बार बार ये कह रहा है. एंड फॉर यू बीइंग 16 एंड 18, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उतना डेवलप नहीं है कि आप डिसीजन ले पाओ कि ये सब्सटेंस के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं. And you start using that substance, you get that euphoric vibe, you are now feeling good. So amygdala यानी कि जो गो सिस्टम है उसने रिकॉर्ड कर लिया ये चीज मेरे लिए सही है, क्योंकि ये चीज ने मुझे उस चीज से डिस्ट्रैक्ट कर दिया जो मुझे परेशान कर रही थी. समझ पा रहे होंगे आप लोग कि जो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है उस चीज को मैंने सब्स्टिट्यूट किया कोई बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर से जो मेरे लिए बाद में भी अवेलेबल हो सकता है. उस चीज को मैंने इंजेस्ट किया, आई टुक दैट सब्सटेंस, इट gave me a euphoric vibe, I am now feeling very good. So because of the neurotransmitters though which were released in the brain, and now amygdala has kept a record. Now this has made you feel good, it's very good for you and you should keep using it. उसने amygdala ने आपको याद दिला दिया है constantly कि ये चीज आपके लिए अच्छी है. Now consider trying it for the first time and trying it for multiple times. The same process is being repeated. आपको कोई चीज आप ले रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, एमिगडाला ने बोला ये आपके लिए अच्छा है, ये आपको थ्रेट से दूर रख रहा है. दिस इज कीपिंग यू अवे फ्रॉम ऑल दैट एंजाइटी, स्ट्रेस or whatever comorbid things that you are dealing with personally due to the environmental factors. Environmental factors यानी कि आपके life experiences, आपका social world, आपकी family conditions, आपका partner के साथ relationship, आपके personal relationship, even relationship with the self. मेरी सेल्फ एस्टीम लो है, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट विथ माई सेल्फ, आई एम नॉट एबल टू टॉक टू 10 different people in the party, I have some self-esteem issues, I don't know how to put a conversation forward. But when I'm taking this substance, I'm a completely new person. So it's a whole different vibe that is going on for me. Isliye I get attached to it because that is actually a reinforcement for me. Now आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि reinforcement होता क्या है. बेसिकली रीइंफोर्समेंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको कोई भी चीज को कंटिन्यू करने की इच्छा जागती है. यू कीप दैट थिंग गोइंग विथ योर सेल्फ. एडिक्शन से रिलेटेड दो रीइंफोर्समेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. पहला रहता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा रहता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव यानी कि ये नहीं कि वो पूरा कंप्लीटली सिर्फ पॉजिटिव ही है, नेगेटिव यानी कि ये नहीं कि वो पूरा कंप्लीटली नेगेटिव है. दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ माय ब्रेन. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट मी इंडिविजुअली, आई टेक अ सब्सटेंस, आई फील गुड, आई एम एंजॉयिंग दिस टाइम एंड आई एम feeling good, I'm feeling happy, I'm feeling good, I'm able to relax myself, I'm in a zone where I'm very comfortable. That is positive reinforcement because इसने, मैंने जब substance लिया मुझे इसने अच्छा feel करवा दिया. But the second is negative reinforcement.
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने सब्सटेंस लिया, पर मैंने जो पहले परेशानियां फेस कर रही थी, मैं आई वॉज फीलिंग एंग्री, आई वॉज फीलिंग एजिटेटेड, आई वॉज फीलिंग एंशियस, वो सारी चीजें क्या हो गई, रिमूव हो गई। मतलब कि आई शुड नो दैट देयर इज अ डेंजर कमिंग, बिकॉज आई एम नाउ सब्सटीट्यूटिंग all the things negative which I am feeling inside me with a negative reinforcer, a substance जो कि मुझसे कुछ ले रहा है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या हो रहा है, वो आपको दे रहा है, आपको अच्छा फील करवा रहा है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या हो रहा है, वो आपसे कुछ ले रहा है। क्या ले रहा है, जो भी आप नेगेटिविटी फील करें, वट एवर दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू विच यू आर नॉट कंफर्टेबल विद। हो सकता है आपका डिप्रेसिव सिम्टम्स हो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, देन यू यूज समथिंग लाइक मेथ or cocaine and you get that vibe that oh my god this is so nice, I'm having a good time. So that is because of the negative reinforcement कि उसने आपसे कुछ ले लिया जो आपको ऑलरेडी परेशान कर रहा था। अब वो चीज जब नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको लेना बंद करा बिकॉज ऑफ सम प्रेशर फ्रॉम योर फैमिली फ्रेंड्स एक्सेट्रा, या फिर यू गॉट एडमिटेड टू अ रिहैब। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर फेसिंग सम विड्रॉल सिम्टम्स बिकॉज वो सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस वापस आ रहे हैं। वो सारी पेनफुल चीजें जो आप पहले फील कर रहे थे, जितनी भी परेशानियां थी आपको, वो वापस आ रही है। तो इसलिए नाउ यू वांट टू सब्सटीट्यूट इट। क्यों? क्योंकि ये एमिगडाला जो है वो चीख रहा है कि मुझे थ्रेट मिल रहा है वापस। थ्रेट यानी कि हमला, जिसको हिंदी में कहेंगे कोई हमला है या फिर कोई परेशानी है आपके सामने, उस चीज से वो आपको बचाना चाहेगा। तो बार बार आपको सब्सटेंस की याद आएगी, क्योंकि बार बार आपको ये याद दिलाएगा वो चीज कि यार इसने मेरी परेशानी दूर करी, इट एक्चुअली रिमूव दैट प्रॉब्लम फ्रॉम मी। So that is how the whole function goes. Now, आप लोग एक क्वेश्चन पुट अप यहाँ पे कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है that people, hundreds of people are trying out substances on a daily basis. Everyone is trying out substances, but not everyone is getting the addictive tendencies. Why some people are addicts and why some people are not? It has a very biological factor to it. It has a very psychological reason to it, that for me to try a substance and me to get attached to it, I need to have something which is actually being fulfilled by it. कुछ तो मेरे अंदर ऐसा होगा कि ये सब्सटेंस को यूज करके आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग नॉर्मल, जो मैं फील करना चाह रही थी। that is the part where I'll be more prone to have addictive tendencies. Second thing which can be responsible is which we'll be also covering in the causes of addiction, genetics. कि अगर मैं जेनेटिकली प्रोन हूं उस चीज से, तो वो चीज मुझे जल्दी सेटिस्फैक्शन देगी rather than any other substance or any other thing. So now, when I move forward, I want you to keep a contact in this, that when we are talking about the brain, it is very important to understand कि ऐसा नहीं है कि ये एक बार जो कनेक्शन बन गया है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। नहीं, ये कनेक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। और उसके लिए प्रोग्राम जो हम लोग फॉलो करते हैं रिहैब्स में, जिसको कहते हैं 12 स्टेप प्रोग्राम, it it functions on the basic phenomena that for you to understand कि कुछ ब्रेन में ऐसी चीजें हैं, कुछ आपके बहुत से बाहर ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। and for you to actually attain soberness or sobriety, you have to feel that you have to give up on some things, that you are not reliable for everything, and you can consciously practice to detach yourself from all the neural connections. जैसे पहले भी आपकी जिंदगी थी कोई एडिक्शन से, कोई सब्सटेंस से रिलेटेड, ऐसे बाद में भी हो सकती है। उसके लिए जरूरी है अपने आप को टाइम देना, उस ट्रीटमेंट प्रोसेस को समझना कि कौन से स्टेप्स हैं जो मुझे रियलाइज करवाएंगे कि मेरे लिए दूसरे तरीके भी हैं अपने ट्रिगर्स को मैनेज करने के लिए, सिर्फ ये एक तरीका नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड विद द स्लाइड। Okay, again, one statement for every one of you. I would like you to answer in the same way that you did before. I have put up a sentence over here. Weak-minded people suffer from drug addiction or any addiction. True or false? Please write down your answers in the comment section. I would be really glad.
Any, that can be anything, not based on what we have covered till now. True. Okay. True. Okay. True. Okay. True. False. Okay. True. True. Any more answers? Okay. I'll be really sorry to break the myth again. It's not something which is which people with weak minds are affected with. First of all, there is no such thing as weak minds. It is all depending upon your conditioning. आप किन चीजों से प्रोन रहे हैं, आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, आपका जेनेटिकल कॉम्बिनेशन क्या है, आपके सराउंडिंग में क्या क्या हुआ है, उस चीज पे डिपेंड करता है अगर आप एडिक्ट बनते हैं या नहीं बनते हैं. This statement is completely false because, for example, if I tell you that I am giving you a substance right now, you have to try it and you have to get attached to it. Is it possible for you to do it? No. For you to actually do something and learn something and adapt something, you have to have such experiences, and those experiences that you have on a very personal level will be determined by the things that you have inside. You have your conscious to say that this is good for you, this is bad for you, this is nice, this is not nice. You will contradict with your logic, your decision making power, and your ability to process that thing. So there is no such thing as weak minded people or strong minded people. This can be done, can be substituted with one thing, that is conscious mind. What is conscious mind? अगर आप समझ पाए अपने ब्रेन के फंक्शन को या अपने माइंड के फंक्शन को, सो द कॉन्शियस माइंड, जिसको हम कहते हैं कि हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, डू यू रिमेंबर कि आप 3 दिन पहले कहाँ गए थे या आपने क्या खाया था, यू माइट बी एबल टू रिकलेक्ट बिकॉज दैट इज स्टिल इन योर कॉन्शियस माइंड. Unconscious mind is the 80%, while conscious mind is just 20%. अनकॉन्शियस में वो सारी चीजें अभी तक आपके साथ जो हुई हैं, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, ट्रॉमास आपने जो फेस किए हैं, आपका जेनेटिकल कॉम्बिनेशन क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, और जो भी चीजें आपके अराउंड हुई है फ्रॉम द डे यू वर बोर्न आर स्टिल इन योर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस. व्हेन आई से सबकॉन्शियस, जो थोड़ा बहुत इजीली रिकॉल कर सकते हैं आप, बट कॉन्शियस सिर्फ 20% रहता है. एंड फॉर एवरी ह्यूमन, every individual who is on the path of recovery, one thing which the spiritual path actually teaches you to is the main factor is for you to actually attach yourself with conscious living, connecting with your own self, self-reflecting, understanding your soul, understanding how the body functions, and then detaching yourself from the negative patterns, because for you to realize you are above this. This is just the body, this is just the brain, this is the system which is going on, but you are somewhat different. You are a soul which is bounded by all these life experiences, bounded by all the traumatic experiences, bounded by 10 different things which are going around you. So for every individual, I would like to take this opportunity to say that please do not discriminate when it comes to addiction. Try and not to discriminate on the basis of weak mindset or strong mindset. There is no such thing. You move from stages to be an addict. It's not a one-day job. You stay in dependency. Dependency is basically the stage जहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि मैंने अभी सब्सटेंस ट्राई किया है, मुझे अच्छा लगा है, मुझे इस चीज ने कुछ चीजों को सब्सटीट्यूट करके दिया है, हो सकता है मेरे एंग्शियस थॉट, हो सकता है मेरे डिप्रेसिव सिम्टम्स, जो भी चीजें जिसको सब्सटीट्यूट करके दिया है उसने मुझे बताया कि यार मुझे ये चीज अच्छी लग रही है. नेक्स्ट कम इज डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी यानी कि जिसमें दो चीजें आती हैं. पहला है आपका टॉलरेंस लेवल. टॉलरेंस लेवल को आप कैसे बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अभी तक फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स और 3 months or 4 months, I was only taking 1 glass of drink. And it was making me feel good. I was able to distract myself from 10 different things, and I was able to focus on something else. Next, that level of substance or that amount of substance is not fulfilling my wants. कि मुझे अगर अपने स्ट्रेस, अपने एंजाइटी को कवर अप करना है तो वो 1 ग्लास मेरे लिए इनफ नहीं है.
I need more. That is the level of tolerance of a substance that you were taking before. अब आपको थोड़ा और चाहिए. So now you have gained a tolerance for the quantity that you started with. Now you want more. That is basically tolerance. Second is withdrawal, that if you don't get that much amount, also you're not able to function. That is the second step. That is dependency. Dependency के अंदर आप पहले tolerance और withdrawal को face करेंगे. एडिक्शन यानी कि आपको कॉन्शियसली, आपको अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ये फील होगा कि अगर वो सब्सटेंस नहीं है तो ये मेरे एग्जिस्टेंस पे बात आ रही है. थ्रेट्स लगते हैं आपको कि नहीं, अब चीजें मैनेज नहीं हो सकती मुझसे. तो एडिक्शन इज नॉट फॉर वीक और स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल. एडिक्शन इज अ प्रोसेस दैट अ पर्सन और एन इंडिविजुअल गोज थ्रू. And same is recovery. We'll be coming to that. Moving to the next slide. Okay, this is my favorite part because in many sessions which I've taken, there's one discussion that always comes up: what actually happens? And this was my biggest question when I was not into the field of psychology, when I was not very much well equipped with the knowledge of substance use disorders. I always used to think, ऐसा होता क्या है जो हमें किसी चीज की इतनी आदत पड़ जाती है या फिर हमारी फंक्शनिंग उस पे बेस्ड हो जाती है. क्या कॉजेस हो सकते हैं? फर्स्ट कॉज इज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, कि आपके ब्रेन में कॉन्शियसली कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं, आपके ब्रेन ने कुछ ऐसे बदलाव लाके आपको दे दिए बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस. यहाँ पे एक्सपीरियंस वर्ड मैं इसलिए हाईलाइट करूंगी क्योंकि भले आपका जेनेटिकल कॉम्बिनेशन होगा, आपकी फैमिली हिस्ट्री होगी, but still experiences play a bigger role in addiction. It's always about what you face around, what you feel, what is something that is going on inside you. So isliye, because brain works on what is being seen, all the senses are awakened by any kind of experiences which are recorded by the brain, and that's how the body responds. ऐसा ही पूरा functioning चलता है. Hope everyone is a little aware about it. नाउ व्हेन आई से द ब्रेन का हमने फंक्शनिंग समझ लिया है कि मैंने पहले कोई चीज ट्राई करी, मुझे अच्छा फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि दिस इज अ पॉजिटिव थिंग व्हिच हैपेंड विथ मी. नेक्स्ट ब्रेन का ये कनेक्शन भी बैठ जाता है दैट आई हैव ट्राइड समथिंग एंड इट रिमूव्ड द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम माय बॉडी, फ्रॉम माय माइंड. पहले मेरे जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे वो चले गए कोई सब्सटेंस को लेने में. दैट इज अ मच स्ट्रॉन्गर कनेक्शन दैट इज फॉर्म्ड, जो आपको बोलेगा कि यार ये सब्सटेंस तो चाहिए क्योंकि ये चीजें वो दूर कर रहा है जो मेरे को पसंद नहीं आती है. सो ये ब्रेन का ऐसे कनेक्शन होता है. अब इसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये वाला पार्ट होता है, इसका क्या रोल रहता है? एज यू ग्रो अप you gather the thoughts of people about you. For example, I am 24 right now. If I start using alcohol on a regular basis, I move from using to dependency to addiction in few months or a year. Now, me being in that stage at 24, I'll be moving forward with my age also. I'll be collecting all the things people have to say about my addiction. My family must be talking. My friends will be talking that you are doing this, you are doing that, this is wrong, this is bad. And I'll be gathering all those because now my decision-making skills are high, and also is my emotional quotient. That is the EQ part of the brain, जो आपको बताता है कि यार अभी आपने किसी को इमोशनली हर्ट कर दिया, अभी आपने किसी को बुरा बोल दिया. दैट इज द रीजन बच्चों में आपने कभी नोटिस किया होगा कि उनने किसी को कुछ गलत बोलते वो सुना, उनने वो अडेप्ट कर लिया और उनने बोल दिया, क्योंकि उनमें अभी कंप्रिहेंसिव स्किल नहीं है कि वो समझ पाए कि सही था या गलत था. वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है. बट जैसे जैसे मैं बड़ी होंगी, मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ता जाएगा, तो मुझे गिल्ट फैक्टर भी आएगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ. इसलिए ही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि ये पार्ट जो ब्रेन का रहता है, इट हैज बीन गिवन वेरी बिग इंपॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू एडिक्शन एंड रिकवरी. बिकॉज if you understand the program, the 12-step program, it clearly mentions that you have to move from the guilt factor to the willingness factor, and that helps you, that is helped you get helped by the prefrontal cortex. यही आपको रिमाइंड करवाता है now it's time to form new connections, but that only happens when you consciously give yourself the chance to improve, the chance to get out of it. We'll be talking about the connection with
the self-reflecting part, the connection with the soul, and understanding how you can move forward with the process of recovery. Now we have completed the part of the brain. Now genetics or the family history or the part which you already have, you are predisposed by the genes, is something which is not under your control. But obviously there is one thing called awareness, using the conscious mind, you being alert about the things that you are practicing, understanding the pros and cons, and using other defense mechanisms to tolerate or manage your comorbid प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रेस्ड हूं, अगर मेरे को एंक्शियस फील हो रहा है, तो मेरे पास ऑलरेडी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम की बात करें तो रिहैब सेंटर्स में एक चीज पे बहुत फोकस दिया जाता है, शेयरिंग. अब वो चीज क्यों शेयर आपको क्यों करना है? क्योंकि वर्बली अगर आप कोई चीज बाहर निकालेंगे तो आपको वो बोल के आप मैनेज करने की क्षमता रखते हैं. पर अगर वर्बली आप नहीं निकाल रहे हैं, वो आपके अंदर है, तो आपको न्यूरल कनेक्शंस, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या याद दिलाएंगे कि पहले ये चीज को काउंटर करने के लिए आप सब्सटेंस यूज करते थे. देन यू विल बी डूइंग द सेम. For you to actually get on the process of recovery and even consciously work, it's very important to understand the importance of connecting with yourself, the importance of sharing, the importance of involving yourself externally with other positive defense mechanisms, which we'll be covering. Okay. The next is environmental, which we also have covered, the traumatic experiences you have had in from your childhood. You might not remember now, but it might show in the behavioral pattern. Just say, for example, if I talk personally, if I get agitated if someone says something negative to me very quickly, why is that? It can be a self-esteem issue. It can be that I'm insecure about something. It can also be that my past experiences have been like that I have been criticized on very small things where I've not been able to defend myself. Now I use aggression as a mechanism to do that. ये आपके सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल चीजें हो सकती हैं जो आपके अंदर आप अडेप्ट करते जाते हैं. द फोर्थ थिंग विच इज ऑल्सो अ कॉज, फॉर एग्जाम्पल, ये उनकी बात हो गई जिनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फील हुई थी, मतलब उनको लगा कि मुझे कुछ मिला, मुझसे कुछ गया नहीं. मतलब मैंने जब सब्सटेंस ट्राई किया, आई फेल्ट गुड, आई हैड अ गुड वाइब विथ माई सेल्फ, आई वॉज फीलिंग नाइस, दैट वॉज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. So they can also turn addicts, but in very less percentage, with only the probability of keeping the use going. They'll frequently use the substance. That is how most of the positive reinforcers are also turned into addicts. But obviously the percentage is very less. Okay, moving to the next slide. Okay, one more sentence again for you, all of you. People have to hit rock bottom before they can get well. यानी कि आपको बिल्कुल उस लास्ट स्टेज पे आना पड़ता है कोलैप्सिंग के ठीक होने से पहले. कोई भी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, एडिक्शन से निकलने के लिए पहले आपको लास्ट स्टेज तक पहुंचना जरूरी है, जहां पे आपकी पूरी फिजिकल और मेंटल बॉडी कोलैप्स होने पाती है. आई जस्ट वांट एवरीवन टू आंसर ट्रू और फॉल्स. व्हाट डू यू थिंक? इज इट वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ हम रॉक बॉटम हिट करें रिकवरी में आने से पहले, कि हम लोग बीच में भी रुक के उस चीज को चेंज कर सकते हैं? फॉल्स. फॉल्स. ओके. फॉल्स. फॉल्स. ओके, गुड. It's not important for everyone to actually hit the rock bottom before actually coming into recovery. Even at the stage of dependency, if you're consciously able to collect कि हाँ मैं कोई नेगेटिव चीज में जाता जा रहा हूँ जहां पे मेरे को वो क्वांटिटी या फिर मेरा वो टॉलरेंस लेवल सेम लेवल पे नहीं है, मुझे उसको और बढ़ाते रहना है, वो आपका एक स्टेज हो सकता है जहां पे आप चेंज कर ले अपना मैकेनिज्म, आप रिकवरी में आ जाएं. इसलिए we get calls from people and individuals asking that it's just been 2 months, should we give the person a chance? The family members ask कि they have been using for 2 months and we are very well aware, should we give them a chance? So we say to those individuals, to those family members, that it will be a easier process for them and also for the family if you do this right now, because for first instance they are not being dependent on the substance for a very long time. They can improve quickly.
So it's always important to make, and I want people who are listening to this, people who are in the webinar, for you to actually understand, if even if your friends or family members are caught up with the dependency, अभी तक सिर्फ डिपेंडेंसी पे हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि that you should seek for help now. It's never late. Whatever stage you are in, it's never late. Even the people who are thinking of using, to remove any kind of experiences or the personal problems that they are facing, you can find the mechanisms. That is why now mental health has been given so much importance, and people are coming and speaking about mental health. First, I used to think that mental health is a pandemic in itself, but now I think addiction is. Because if your mental health is not disrupted, you'll obviously look for options to actually reciprocate that pain that you feel. And addiction is that most people opt for, even keeping the genetical predisposition out of the picture. Okay, next slide. Okay, this was question which was asked to me by my brother. He was actually asking me that you are in this field, I understand that you work with addicts and you know how they function, you know what the DSM says. DSM is basically a psychological manual used for that diagnostic and statistical manual has all the disorders, all the psychological disorders. We know what's on the paper, we know how it actually functions, but how do we identify as a layman who is not very much related to the field or not closely working with addicts? How can they recognize if the person is surrounded with addiction? If you are aware that the person is using the substance, these are some of the things that you can observe in them if they are moving from the stage of dependency to addiction. First is they are unable to stop. यहाँ पे मैंने काफी सेशंस में भी ये मेंशन किया है that for any one individual who is using, they have to admit that I'm not able to stop. Why is it important? Because that is the first cue that something is wrong. So if you ask them, they'll obviously try to cover it up with something which is more manageable in their mind, that this can work for me and I won't have to stop using. So first is that they are not able to stop. They might even give you the excuses for some time. They might even try to control themselves, but they cannot. Now here the person shouldn't be blamed, because as I told you, the body is just responding. The words which are coming out, they are responses. They are not the truth. Actual truth is inside the brain, inside the neural connections which have been stuck. Right. Second thing is changes in their mood, sleep, and appetite. Most of the people who are addicted to substances have problem in their sleep, have problem in their appetite, and their moods. Sometimes they feel very agitated, sometimes they have normal feelings, sometimes they feel very low. So these are the mood swings which you feel, which means that somewhere down the line something is wrong and we are moving towards addictive tendencies. The third is continuing despite negative consequences. Negative consequences like breaking of relationships, family trauma, financial trauma, health, physical trauma, your functioning of the parts of your body, it's going south and everything is disrupted. Still, you are not able to stop yourself. That is another cue. The fourth is denial. Denial itself is a very vast topic, and for everyone who is watching, if you want to know more about denial, you can go to our YouTube channel and find a video for denial. We have covered the topic completely over there, but just to brief, denial is basically, for example, how do you know that I am in denial? I would always try to back up my sentences using few pointers. For example, if I am using a substance and you tell me that you shouldn't do this, I would respond like, I know it's wrong for me. If I want to stop, I'll stop tomorrow. This is not you believe. The person who is saying it has actually believed that it is possible for me to stop tomorrow. It's just that I'm not wanting to. It's not the ultimate truth. It might be the truth for the person who is saying it, but it's actually denial. Likewise, there are more parts to denial where you feel that no, you have to defend yourself, who you have to defend the substance you are taking. That is denial. The next is preoccupied with the substance or related behavior. 60 to 70% of the day, the person is occupied with either the thought of it or using of it or trying to manage the substance, get the substance and, consume it.
Next is increasing the amount of substance. My friends and family members always ask me, why is it how do you differentiate between a social drinker and an addict? Basic cue is, a social drinker will always know that this is my limit, and they won't feel the urge to expand. They might do it sometime, but that also they'll do it consciously, that they are doing it now. They might not do it later. But for an addict, it's physically impossible for them to actually sustain on a particular level of substance. They just want to increase the substance. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको ये समझना है कि ब्रेन का जो पार्ट है, एमिगडेला, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो आपको कोई भी थ्रेट से बचाता है. आपके लिए थ्रेट क्या हो सकता है? इवन अगर आपको कोई बोल रहा है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम गलत चीज में फंसते जा रहे हो, वो भी आपको एक थ्रेट लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने आपको अच्छा फील कराया, उसने आपसे कुछ नेगेटिव चीजें ले ली, उसने आपको एक हाई फील कराया. नाउ यू आर फीलिंग कंटेंट, वो आपको वापस चाहिए, आपको एक थ्रेट फील होता है. इसलिए भी आपका एमिगडेला आपको मजबूर करता है ये बिलीव करवाने पे कि ये जो सामने वाला बोल रहा है वो गलत है, एंड आई नीड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. प्रायोरिटाइजिंग द सब्सटेंस. नाउ यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देना चाहूंगी. एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अब्राहम मैस्लो, जिनने नीड हायरार्की थ्योरी बताई थी कि पहले इंसान को हमेशा लगता है कि उनकी बेसिक नीड्स अकम्प्लिश होने चाहिए, यानी कि फूड, वाटर, शेल्टर, बेसिक चीजें जो हमें चाहिए रहती हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए घर होना चाहिए. ये बेसिक चीजें फुलफिल करना हमारी प्राइम फोकस पॉइंट रहता है, और ये होती हैं तो हमारे बॉडी में बेसल गैंग्लिया के थ्रू ही कुछ डोपामिन सिक्रीशन होता है, जिससे हमें लगता है वी आर सेटिस्फाइड. ये सारी चीजें भी सब्सटीट्यूट हो जाती हैं जब एक इंसान एडिक्ट है. यानी कि अगर आप उनको बोल रहे होंगे अभी खा लो, अभी खा लो, अभी खा लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दे वोंट बी कंसर्न्ड बाय इट. So that is one biggest cue that someone is trapped in the web of addiction. Now next is loss of interest in other activities. पहले हो सकता है कि कोई, अगर for example a person, a boy who is a teenager or a young adult likes to play cricket, but got distracted of using the substance, got dependent and got addicted towards it, now has no interest in the area of cricket, which used to be the biggest activity that they used to do on a daily basis. Now it's not of their interest. That is one more cue that you are completely focused on one thing and your neural connections are completely focused on the substance. The last one is financial problems. We have more added to the list. We have number of things which you can notice in an addict, but majorly these are the problems. You might face financial crunch, but still you cannot leave it. You will find things like, we have seen people who have engaged themselves, which they are guilty about, engaged themselves in stealing, theft, all of this, but they want it. It's like for them, they have this prime need of getting the substance, क्योंकि उसके अलावा उनको लगता है उनके existence पे बात आएगी. For being alive, for living, it's very important to have the substance, and for that they can go to any extent, which can also be a reason that the families face financial problems while the person in their family is using, but because for them there is no such thing as these are my family things, for the gold, the money and everything, they'll use it. It's not that they are flawed, but because they cannot control. Next slide please. Okay, ट्रिगर्स क्या होते हैं बेसिकली, क्या ऐसा ट्रिगर करता है जो इंसान, अब लेट्स टॉक अबाउट रिकवरी फर्स्ट. नाउ whenever a person is admitted to a rehab, first of all, why rehab should be the option? Why not medications? Why not just let's take some pills and get treated at the home? No, it's not possible. For you to take a medicine, you might just feel okay, your cravings you might be able to control your cravings, all the urges for some duration. It cannot last because the neural connections are still fixated. They are just slightly put down by the medication, the dose of the medication or the effect of the medication. It will come back to its normal. So that is why people ask, why can't we treat addiction at home, taking some medications? Why is that not possible? It's not a long-term solution. Why is rehab a long-term solution?
To all my viewers right now, I want to vouch for this, not being particularly biased because I am closely related to the field, but because it is the best thing that you can do for the person dealing with addiction. They might not like you for it. People don't actually feel nice being coming to a rehab, but that is the best that can happen to them. Why? Because in a rehab we have this notion of actually working on the inside of a person. Now when I talk about inside, I'm not talking about the organs, I'm talking about the soul of a person. We bring the person, we try and connect the person with themselves. We try and make them understand as to how they are caught up with 10 different things around. वो एक वेब में कैसे फंस चुके हैं जिससे उनको निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब कोई पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, उनको नेगेटिव फीलिंग्स जैसी भी आ रही हैं अंदर से क्योंकि वो सब्सटेंस चला गया है, वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है. हम लोग उनको ब्लेम कर सकते हैं कि हाँ इसमें इतना गुस्सा है, इसमें इतना चिड़चिड़ापन है, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, बट दे आर नॉट एट फॉल्ट. दे आर जस्ट स्टैंडिंग वे अवे फ्रॉम देमसेल्व्स. That is the only reason indigenous therapies like yoga and meditation, the spiritual path, is the most important thing of the program. The 12-step program that is followed by Simranshri Rehabilitation Centre focuses mainly on connecting you with something that you feel bounded with, but not uh, physically feeling that existence is at stake. You feel content, you feel normal, you feel happy. Just because you have self-reflected, now you're connected with souls and you are able to detach yourself from all that is external. External meaning that the problems of the family, problems of my friends, my personal traumatic experience, you are able to let it go. You are at ease now. You are able to function, and it is not one day job. It is a process. For that, we only ask for one thing from the families and also from individuals suffering from substance use disorder, that आप अपने आप को वक्त दें, आप अपने आप को समझने में थोड़ा सा पेशेंस रखें. क्योंकि अगर हर इंसान ने अपने आप को फिगर आउट कर लिया होता कंप्लीटली कि हाँ मैं अभी ये करूंगा, अभी ये नहीं करूंगा, लाइफ बहुत इजी होती. मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होते, एडिक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. वर्ल्ड वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट प्लेस. We can imagine of that and we can strive for that and we can start living in it. Hundreds and thousands of people are coming into recovery and relapsing again. People say that relapse is a part of recovery. Many people say that relapse is a part of recovery. That is definitely, it can be a part, and it's not the end. If you have relapsed, it's not like that you can't come back. But for you to believe that relapse is a part is wrong. Any addict, I say, I do not discriminate that the person is addict. No, I equally value, I equally respect every individual until unless they are human beings or people around us. It's not your character flaw. So first of all, you do not have to judge yourself for it. You have to understand that first of all, I need to connect with myself, and that will happen only if you start giving yourself some time. Only if you start accepting that हो सकता है अगर ये प्रोग्राम 12 स्टेप प्रोग्राम जो 1935 से यूज करते हुए आ रहे हैं, लोग रिकवरी में आ रहे हैं, रिलैप्स हो रहे हैं, फिर से रिकवरी में आ रहे हैं, कुछ तो बात होगी. I tell every family also when we engage with the family of the patients that you need to actually respect, trust, and build that connection again with your member. Because every individual around us, everyone, even I, including me, and anyone who is addict or non-addict, doesn't matter, we are all seeking some kind of connection. We all want something more than normal. We all want something to be fulfilled inside us. We all want to fulfill that void that we feel, the pain that we feel when we sit alone. That is one way. The one way to do that is you can connect with someone else. For example, I find someone who is my mentor who can guide me as to this is okay for you, this is not. Whenever I feel overwhelmed, I would like to speak, I would like to share, I would like to take it all out and not use the substance. That is also good. But equally important role is played by connecting with your own self. I should feel okay if I'm in my company. I should feel okay with my thought process because I want कि ये जो prefrontal cortex है ये मुझे rule करे.
मेरा एमिगडेला, मेरा बेसल गैंग्लिया मुझे रूल नहीं करे। मैं अपने लिए डिसीजन बना पाऊं कि हाँ, मेरे लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, मैंने अपना ये ट्रॉमा फेस किया होगा, मुझे एंजाइटी फील होती है, मुझे डिप्रेशन फील होता है, पर मैं इससे निकल सकता हूं अगर मैं अपने आप से कनेक्ट करूं। मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो उसका बेसिक चीज ये होता है फॉर यू टू फोकस ऑन समथिंग दैट इज इनसाइड यू. It can be a mantra that you are saying, it can be your breath, it can be any focus point which is inside you. Because when you connect with yourself, you see solutions for yourself. And when you seek solution for yourself, which is coming from inside, you recover better and stronger than ever. फॉर वन पर्सन दे कैन ऑप्ट कि हाँ, ये मेरे मेंटर हैं, ये मुझे कुछ बोल रहे हैं मेरे लिए भले के लिए, मेरे भले के लिए बोल रहे होंगे और मैं इनकी बात मानू, वो भी एक डायरेक्शन सही है। बट ये भी उतना ही सही है कि आप मानो कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, मैं अपने आप से कितना कनेक्टेड हूँ, मुझे अपने आप से कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कौन सी चीजें हैं जिनको मैं लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं सॉल्यूशन चाहता हूँ, मैं अपने आप से कनेक्ट करना चाहता हूँ. That is the only way you can achieve recovery. But recovery में आने के लिए it's very important. मैं हमेशा ये बोलूंगी कि you should be willing to give yourself time. It's not just rehab में जैसे for example patients keep asking us कि कितना time. It's not about some months. It's not about 1 year. It's a lifelong process till you are alive. Every day you have to consciously connect yourself with the inner soul and talk to it and just understand it कि मेरे लिए इतना difficult क्यों है यहाँ पे अपने साथ exist करना without using any substance. मैं क्यों खुद से content नहीं feel कर सकता. It's not some months, it's not some years, it's a lifelong process. Until the day you feel, no, I'm able to connect with myself, I'm able to sit in a room and I'm not feeling that urges. Nothing is able to trigger me. No people who I used with, no place that I was using at, no thing which can give me the memory flashbacks or the emotional flashbacks of using, and no thinking pattern which is inside me. लोगों को लगता है कि बाहर है रिलैप्स होने की क्यूज, कि मैं अगर वो जगह जाऊंगा जहां पे मैं यूज करता था, मैं रिलैप्स हो जाऊंगा, मैंने अगर ये चीज देख ली मैं रिलैप्स हो जाऊंगा. नो, अनटिल अनलेस वो अपने आप को आपने थ्रेट दे रखी है कि यार ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो हो सकता है आप अपने आप को और प्रोन कर रहे हो. आप अपने आप को ये सब्स्टिट्यूट करके बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे अपने आप में ट्रस्ट है, आई कनेक्ट विथ माई सेल्फ, आई फील ओके. अगर मैं वो चीज क्रॉस भी कर रहा हूँ, मैं वो जगह से क्रॉस भी कर रहा हूँ, मैं वो लोगों से भी क्रॉस कर रहा हूँ, मैं अपने में इतना संतुष्ट हूँ, मैं अपने सोल से इतना ज्यादा कनेक्टेड हूँ कि मुझे वहां पे ट्रिगर्ड फील नहीं होगा. Triggers can be managed by your thinking. Also, your thinking can be your biggest trigger. If you say negative things to yourself, which you gathered from your experiences, आपके कुछ ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे, लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया यूजिंग के लिए, लोगों ने आपको भला बुरा बोला, क्योंकि हर इंसान के लिए इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से समझना पॉसिबल नहीं है, वो भी आपको समझना पड़ेगा. इसलिए यू हैव टू गिव योरसेल्फ द लेवरेज कि मैं अपने आप को संभालूंगा, मैं अपने आप से कनेक्ट करूंगा, मैं अपने आप को उतना अवेकन्ड फील कराऊंगा through different approaches of yoga, meditation, or therapy, counseling, etc., etc. I will start connecting with myself. I will stay connected to myself, and that will remove all the negative triggers of in the process of recovery for any addict. Lastly, I would like to say by one quote, please next slide, which was told by John Harry. They said, he said, the opposite of addiction isn't sobriety, it's connection. You can connect with the program, you can connect with your mentors, you can connect with any individuals who is keeping you optimistic, but it's very important for you to connect with yourself. If you start the process today, it's not late. If you start the process after a month, when you feel that now I'm ready, it's okay. It's never late. It's also okay, whatever has happened to you, it's not your fault. You are, as a human being, you are good enough. You are well. You were caught up with something. Don't keep that thought absorbed. Even the family, if they are listening, don't actually judge the person by what they have done.
Something might be here that they are doing it continuously, and you have to give them that leverage. You have to still try and make a connection with them and guide them to have a connection with themselves. Every individual, non-addict or an addict, have to stay connected with themselves, because the best peaceful experience that of life that you can have is staying connected to your soul. Me being a psychologist, I'm still in the process of connecting with myself. I hope you also start connecting with yourself, start the process, figure out what's inside you and how you can help yourself. If you're not able to do it, we, Simranshri Rehabilitation Centre, will always be available for anyone who is facing problems with their own mental space, their own addiction, or whatever life crisis they have. Here I sum up again: the opposite of addiction isn't sobriety, it's connection. Connection with yourself. Thank you so much. I hope this was a good experience for all of you. Thank you. Thank you so much, Gunjan. And anyone who requires help with any kind of addiction, any kind of problem that they are facing, please contact Simranshri Rehabilitation Centre. Visit our website at www.simranshri.com, and we'll be here to assist you 24/7. Thank you. Thank you. Bye, everyone. It was really nice meeting you again. Bye. Thank you, Thank Gunjan. you. That was really nice. Thank you, ma'am. Yeah. So I hope we all have a very good learning that we have got today. That self-confidence and whatever Gunjan has told is very, very precious, and it gives one message that life is precious and Yeah. we have to take care of our life. This will not come again. So Yeah. thank you very much for your lovely thoughts, Gunjan. Thank you. Thank you so much. Thanks for your patience. Thanks for listening to me. And I hope we'll meet soon and we'll have great discussions. We'll look after ourselves. We'll grow ourselves mentally and physically. And we'll start self reflecting now and today. Thank you so much.